So guys, welcome to my YouTube channel. First part रे आमे सेल रो तार केमती ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस आक्रॉस सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कौन कौन थाए से सब पढ़ी थिले. सो सेकंड पार्ट रे आमे ब्लड पढ़िबा. ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन एनिमल दैट डिलीवर करे नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन टू द सेल्स ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट away from those same cell. Function of the blood. आम बॉडी रे ब्लड रो कौन कौन फंक्शन थाए. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, रिमूवल ऑफ वेस्ट मध्य रिमूवल करिवारे सहाय्य करि थाए. इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, कोआगुलेशन द रेस्पॉन्स टू ए ब्रोकन ब्लड वेसल, द कन्वर्सन ऑफ ब्लड फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड जेल टू स्टॉप ब्लीडिंग. मेसेंजर फंक्शन मध्य करिथाए. रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, बॉडी रो पीएच मध्य रेगुलेट करिथाए. रेगुलेशन ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर को मध्य रेगुलेशन करिथाए. हाइड्रोलिक फंक्शन. तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द ब्लड. इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड रे कौन कौन थाए. Composed in vertebrate, it is composed of blood vessels suspended in blood plasma which constitute 55% of blood fluid, is mostly water and contains dissipated protein, glucose, mineral, iron, hormone, carbon dioxide and blood cell themselves. Water serves as transport medium, carries heat. Protein, albumin. फर्स्ट आम देखा आल्बुमिन. प्रोटीन मध्य कौन देखा आल्बुमिन 60 to 80% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन करुच्ची. मोस्ट इंपोर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. तापर आम देखा ग्लोबुलिन. अल्फा एंड बीटा, सम आर इंपोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू द ब्लड, सम आर क्लॉटिंग फैक्टर. They are produced by liver. Globulin basically liver रे produce होता है. Gamma globulin और immunoglobulin produced by lymphocyte. फाइब्रिनोजेन साउंड आउ गोटे प्रोटीन इंपोर्टेंट इन क्लॉटिंग. फाइब्रिनोजेन रो इंपोर्टेंस कौन से क्लॉटिंग रे सहायता करिथाए. प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ये भी मध्य लिवर रे प्रोड्यूस होता है. तो आम देखिले प्रोटीन तीन प्रकार आल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन. इनऑर्गेनिक कन्स्टिट्यूएंट कौन कौन रोची. सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब मध्य रोची. न्यूट्रिएंट मध्य ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एंड विटामिन्स. वेस्ट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, डिजल्व गैसेस, ऑक्सीजन and carbon dioxide or hormone. Then blood cell mainly red blood cell, white blood cell, platelet. Red blood cell also called कौन कुहा होछि ना तो एरिथ्रोसाइट. white blood cell को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट मध्य कुहा जाए. The most important evidence in vertebrate blood is red blood cell. बेसिकली रेड ब्लड सेल अधिका परिमाण रे आम बॉडी मध्य थाए. रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट विषय पढ़ा. रेड ब्लड सेल बाइकनकेव शेप रो, लैक ए न्यूक्लियस, कैन नॉट रिप्रोड्यूस. रेड ब्लड सेल लाइफस्पैन केते ना 120 days. देन ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन टिपिकल कंसंट्रेशन इज 4 to 6 million पर क्यूबिक मिलीमीटर. आम बॉडी भीतर रेड ब्लड सेल थाए. कंटेन करे कार्बोनिक एनहाइड्रेस. हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ ग्लोबिन मेड अप ऑफ 4 हाईली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन प्लस 4 हेमी ग्रुप. देन आम देखा hemoglobin. each molecule can carry 4 molecule of oxygen. hemoglobin ले बेसिकली 4टा molecule of oxygen थाए. कॉल जहाँ को कहते ऑक्सी hemoglobin. when carrying oxygen called reduced hemoglobin. जेतेबेले ऑक्सीजन कैरी करि न थाए ताको कहते reduced hemoglobin. can also combine with carbon dioxide, help transport carbon dioxide from tissue to lungs. then हमें देखिबा white blood cell. व्हाइट ब्लड सेल हैव न्यूक्लिय थाए किंतु हीमोग्लोबिन व्हाइट ब्लड सेल ले न थाए. बॉडी भीतर व्हाइट ब्लड सेल केते थाए 5000 ରୁ 9000 थाए. सम इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कोन फागोसाइटिक मीन्स सेल एनगल्फ, कैपेबल ऑफ डायपेडेसिस, कैपेबल ऑफ
amoeboid movement exhibit chemostaxis. Then type of WBC. WBC केते प्रकार ना दी प्रकार granular WBC आ गोटे agranular WBC. granular WBC रे कौन ना numerous granules थाए granular WBC रे अल्प परिमाणर granules थाए. The primary function of various white blood cell रो primary function करना न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बासोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स रो प्राइमरी फंक्शन फास्ट कौन फागोसाइटोसिस. फागोसाइटोसिस मु फास्ट कही सेल एनगल्फ वेरी इंपोर्टेंट इन इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन जिते आमर अधिका होता है इन्फेक्शन होता है से न्यूट्रोफिल से काम करें. एओसिनोफिल हेल्प करता है इनिशिएट सस्टेन कर इन्फ्लामेशन कैन एक्टिवेट टी सेल. Then basophil along with mast cell play a role in inflammation allergic reaction. ये मध्य हमारे inflammation रे ही काम करी थे. मोनोसाइट रो मध्य से काम फागोसाइटोसिस ही थाए and also important antigen presenting cell lymphocyte immune response. Then platelet रो काम कौन platelet formed in bone marrow from cells called as megakaryocytes. It have no nucleus. एतरे किछि nucleus ना थाए but can secrete करे variety of substances, can also contract because they contain actin or myosin. Normal characteristics in blood is about 250,000 per cubic milliliter. Remain functional for about 7 to 10 days. Play an important role in hemostasis means preventing blood loss. क्लॉटिंग रे हमको साहाय्य करी थाए. हेमोस्टैसिस इज ए प्रोसेस व्हिच कॉजेस करे ब्लीडिंग टू स्टॉप. ब्लीडिंग को हेमोस्टैसिस स्टॉप करी थाए. तो ब्लीडिंग जो स्टॉप ही थाए ताकू आमे से प्रोसेसटा को हेमोस्टैसिस कहू जो थरे कि बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटलेट. तो हेमोस्टैसिस आमर 3टा मेजर स्टेप हेमोस्टैसिस रे थाए. फास्ट भास्कुलर स्पाजम हबो, देन प्लेटलेट ब्लॉक फॉर्मेशन हबो, देन ब्लड कोआगुलेशन हबो, तापरे आमर ब्लीडिंग स्टॉप हो जिवो. देन टाइप ऑफ हेमोस्टैसिस रे हमें देखिबा केमिकल हेमोस्टैसिस, डायरेक्ट प्रेशर और प्रेशर ड्रेसिंग, सुचर एंड टाइज, फिजिकल एजेंट्स. तो दीज आर द 12 कोआगुलेशन फैक्टर. तो फर्स्ट फैक्टर हमें देखा फाइब्रोनोजेन. फाइब्रोनोजेन रो काम कौन फॉर्म्स करबो क्लॉट. एसोसिएटेड जेनेटिक डिसऑर्डर करना जो जेतेबेले हमको फैमिलियल रेनल अमाइलोइडोसिस होता है, कंजेनिटल फिब्रिनोजेनेमिया होता है. तो सही टाइम रे फिब्रिनोजेन आमर काम रे आसी थाए. देन प्रोथ्रोम्बिन काम करना ये एक्टिव फॉर्म एक्टिवेट करे आई वी एक्स वी डबल आई वी ट्रिपल आई एक्स ट्रिपल आई प्रोटीन सी प्लेटलेट ये सब कोआगुलेशन फैक्टर को एक्टिवेट करि थाए. एटा बेसिकली थ्रोम्बोफिलिया रे यूज होता है. टिश्यू फैक्टर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन तार काम कौन को फैक्टर ऑफ वी डबल आई ए फॉर्मली नोन एज फैक्टर ट्रिपल. Then IV calcium रा काम कौन करना required for coagulation factor to bind to phospholipid known as factor IV. Then factor V को कौन कहती प्रो एक्सिलरिन labile factor. फैक्टर 7 को कौन कहती स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिन. फैक्टर 8 इज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए. फैक्टर 9 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी जे कि हेमोफिलिया बी रे यूज होता है. देन फैक्टर 10 रे हमर आछि स्टुअर्ट पावर फैक्टर जहाँ स्टुअर्ट पावर फैक्टर बोली कहती जे कि हमारा कंजेनिटल फैक्टर एक्स डेफिशिएंसी रे काम रे आस्ता है. देन एक्सआई को कौन कहती प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट. देन एक्स डबल आई हेजमैन फैक्टर, एक्स ट्रिपल आई फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. दीज आर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोआगुलेशन फैक्टर्स. देन फाइब्रिनोलाइसिस कौन डिसोल्यूशन ऑफ क्लॉट मेकानिज्म होची प्लाज्मिनोजेन. आमर क्रॉस मैचिंग केतेबेले करा जाए जेतेबेले जनकर ब्लड अरेंज करा जाए ब्लड दवापाई ब्लड ट्रांसफ्यूज से बेले आमर क्रॉस मैचिंग दरकार होता है. क्रॉस मैचिंग कौन ब्लड इन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन रेफर्स टू टेस्ट दैट इज परफॉर्म प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ऑर्डर टू डिटरमिन इफ द डोनर ब्लड इज कंपैटिबल विथ द ब्लड ऑफ एन
intended recipient. Cross matching is also used to determine compatibility between a donor and recipient. जी डोनेट करुच्ची आउ जे ग्रहण कर दी जनक भितर कंपैटिबिलिटी अच्छी ना नहीं से को देखापी क्रॉस मैचिंग कराए. क्रॉस कंपैटिबिलिटी इज डिटरमिन्ड थ्रू मैचिंग ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ व्हिच आर एबीओ आरएच सिस्टम एंड बाय डायरेक्टली टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए सैंपल ऑफ डोनर टिश्यू और ब्लड. These are the most important point about blood function of blood, composition of blood. Then blood cell आमे मध्य देखिले types of blood cell मध्य हमारा RBC, WBC, platelet, किछु coagulation factor मध्य पढ़िले. तो आमे तापरे देखिबा blood vessel. थर्ड पार्ट रे आमे ब्लड वेसल विषय रे पढ़िबा. थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मेरा राम आपका भला करे, आपको खुश रखे.